Assalamualaikum students, it's Ali and let's talk about how to prepare for ETA 2, ETA preparation and its method. हमने इससे पहले बात की है ETA के बारे में कि ETA क्या है। हमने अपना YouTube चैनल इंट्रोड्यूस कराया कि ETA इन माई पॉकेट, जो कि पाकिस्तान का पहला YouTube चैनल है और ये एक ऐसा YouTube चैनल है जहां हम ETA के बारे में आइडियाज़, ट्रिक्स और नई नई कंसेप्ट शेयर करते हैं। हमने बात की थी व्हाट ETA इज़, जो कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की एजेंसी है, एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन एजेंसी। अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं इसका मतलब आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाओगे, और अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो आप एक अच्छे मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जा सकोगे। हमने MCQs डिस्ट्रीब्यूशन की बात की कि कितने MCQs हर फील्ड से होते हैं और टोटल MCQs 200 होते हैं। मार्किंग स्कीम के बारे में बात की कि 4 मार्क्स -1 रॉन्ग पे, और टोटल अगर आपने गलत किया तो -5 कटेंगे। टोटल मार्क्स 800 होते हैं और उसके मुताबिक आपने स्टडी करनी है। आंसर शीट के बारे में हमने बात की, रॉन्ग वे ऑफ फिलिंग और करेक्ट वे ऑफ फिलिंग के बारे में बात की। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रह रहे हैं वो गुड मार्क्स प्लानिंग है। और इसी तरह बहुत सारे सेशन हमारे, मैंने जितने भी सेशंस किए हैं उसमें जैसे पहला सेशन हमारा ये APS में रिसेंट ट्रेंड्स इन ETA एंड इट्स प्रिपरेशन पहला हमारा था। उसमें हमने पूरा ETA के बारे में बात की कि रिसेंट ट्रेंड्स इसके क्या है और हम कैसे प्रिपरेशन करें। उसके बाद हमने हाउ टू गेट गुड पोजीशन एंड हाउ टू गेट गुड मार्क्स। तीसरा जो हमारा सेशन था उसमें था कि वाई स्टूडेंट्स डिसक्वालीफाई द ETA टेस्ट, और इसी तरह बहुत सारे थे जो कि हमने, और स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा फीडबैक मिला हमें। आज हम बात करेंगे गुड मार्क्स प्लानिंग के बारे में। तो गुड मार्क्स प्लानिंग में पहली जो बात आती है वो है कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। आप याद रखिए, जब आप ETA की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको पिकी और चूजी होना पड़ेगा। और याद रखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप डिफ्रेंशिएट कर सके FSC की तैयारी और ETA की तैयारी में, कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन FSC प्रिपरेशन एंड ETA प्रिपरेशन। या वहाँ आपको एक क्वेश्चन लिखना होता है और उसमें कहते हैं कि राइट द नोट ऑन दिस, और राइट अ लॉन्ग क्वेश्चन और सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वहाँ द वे यू सॉल्व द क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ द वे यू आंसर द क्वेश्चन देखते हैं। इट मीन्स वहाँ पर आपको एक सही मेथड से आपको आंसर लिखना है, और यहाँ आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना है। They do not care about the way you write, they do not care about the method you use, लेकिन आपने क्या करना है, आपने आंसर लिखना है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पिकी और चूजी होना पड़ेगा। अब पिक करो कॉन्सेप्ट और चूज करो, इसलिए आपको अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ईच चैप्टर। हर चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको वो देखने हैं। और याद रखिए, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि डोंट स्टडी रैंडमली, स्टडी कंसेप्चुअली। अगर आप रैंडम स्टडी करते हैं, जैसे आप FSC एग्जाम के लिए कर रहे थे, तो याद रखना आपके लिए ETA का क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका कंसेप्ट सबसे पहले क्लियर हो। दूसरी बात यह है कि सफिशेंट पेपर सोल्यूशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास 5 पेपर्स हैं तो आप शुरू हो जाएं 2017, 16, 15, 14, 15, 13 और आप सारे पेपर स्टडी करें। अगर पेपर्स नहीं हैं तो उसका एक अल्टरनेटिव है, जो कि मॉडल पेपर्स होते हैं और मॉडल टेस्ट्स होते हैं। आपको मुख्तलिफ अकेडमीज़ में मॉडल पेपर्स, मॉडल टेस्ट्स मिलेंगे। आप वो टेस्ट उठाए और वो टेस्ट हल करें। या मेन बात यह है कि आप अगर जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप जा सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जब आप एक एकेडमी में जाते हैं या एक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं जहां आप मॉडल पेपर देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि एग्ज़ाम कैसे होता है, बिकॉज यू हैव टू सॉल्व एग्जैक्टली इन द सेम वे लाइक यू गोना डू इन द ETA एग्जाम. Okay, so the model test, model papers, these are very important. You have to go there, you have to solve there, you have to do the right filling, and when you do the filling, after that there is a discussion session. The experts who are the ETA experts and professionals, they come and they tell you how to solve this question and related questions as well. तो एक क्वेश्चन नहीं बल्कि उसके साथ बहुत सारे और क्वेश्चन भी हल हो जाते हैं। गाइडलाइंस फ्रॉम अ रियल ETA इंस्ट्रक्टर, ये बहुत ही अहम है कि आप एक रियल ETA इंस्ट्रक्टर को फॉलो करें। याद रखना, द की टू सक्सेस, ये जो मैंने लिखा है, रियल इंस्ट्रक्टर इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो आप ETA को
बहुत अच्छी तरह क्वालिफाई कर सकते हैं, बल्कि क्वालिफाई नहीं, आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कीप इन टच विद योर ईटा टीचर और ईटा इंस्ट्रक्टर, क्योंकि वो आपको नई कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताएगा, नई स्कीम्स के बारे में बताएगा, नई आइडियाज़ के बारे में बताएगा, न्यू ट्रैक्स के बारे में बताएगा। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर साल के कुछ ना कुछ चेंजेस होती है, एंड यू हैव टू फॉलो दोज चेंजेस, वेयर द चेंजेस आर एंड हाउ कैन वी ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स, दोज चेंजेस। डेली स्टडी आवर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप स्टडी करते हैं तो याद रखें ईटा इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टूवर्ड्स द स्टडी है। If you are not determined towards the studies, you cannot qualify the ETA, you cannot get good marks, and you cannot get position. If you want to take position, if you want to have good marks in ETA, you have to do daily study and daily study hours. So how can you manage the daily study hours? याद रखिए, अगर आपने टाइम रखा 5 hours per day, तो आपको उन 5 hours में 100% डिटरमिन होना पड़ेगा, 100% फोकस के साथ, 100% कंसंट्रेशन के साथ आपको स्टडी करनी पड़ेगी। और याद रखना, नो फैमिली, नो मॉम, नो डैड, नो फ्रेंड्स, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, और आप सिर्फ स्टडी करें। तो डेली स्टडी आवर्स अगर आप 5 घंटे रखते हैं तो याद रखना आप क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आपने 10 आवर्स रखे तो याद रखना आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। And more than 10 hours mean that you can qualify with very good position. It means you increase the study hours with determination, you increase your marks. And you increase your marks, it means you go to a good college, medical college or engineering college. जब आप स्टडी करते हैं इन स्टडी आवर्स में तो यूज द मार्किंग स्कीम, एंड यू शुड हैव द मार्किंग स्कीम। सो स्टडी अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम। आप जब स्टडी करते हैं तो मार्किंग स्कीम अब कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाउ टू फॉलो द मार्किंग स्कीम। सो उसके लिए याद रखें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ईच चैप्टर। ईच चैप्टर हैज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ETA MCQs. डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पोर्टेंट टॉपिक। अब देखना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि you should understand which topic is the most important in ETA for MCQs and which is not. For example, you just waste your time reading the first chapter, reading, but you do not study in the chemistry, for example. You do not study about the number of moles and number of electrons, number of protons, number of neutrons. It means you cannot qualify, because as you know, 5 MCQs are from there. It means you're going to lose the 5 MCQs. So therefore, you have to see the important topics in each chapter. Questions from the same chapter from the papers you study a chapter. So you should go back and you should see to the past papers. कहाँ से question आए हैं and what kind of questions are there from the specific chapter. एक chapter से specific question कहाँ से आए हैं. तो आप उन questions को repeat करें, उन questions को सही study करें और उन questions को follow करें. अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ईटा में नहीं है, जो ईटा में कई सालों से नहीं आए हैं, तो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, जस्ट रीड इट एंड फॉरगेट इट एंड जस्ट गो टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यू शुड just do again and again, again and again. Now we are coming towards the numerical and problems. Keep remember, you should solve all the numericals and problems in the book. First year, second year, just go to the math, go to the physics, go to the chemistry and solve all. You can see these are the problems. Sometimes you have a question MCQ and you think that this is very easy MCQ, but you have to follow, you have to do the calculations. The important thing is you should do in 30 to 40 seconds. If you just do it again and again, you will have a practice and then you can solve that question in seconds, like 30 to 40 seconds. So you have 620 extra seconds, and that is very important, okay? 10 seconds are also very important because you can just transfer the answer to the answer book or not. अब पाकिस्तान में दिस वेरी डिफिकल्ट चॉइस इन पाकिस्तान के आप फॉलो करें किस किताब को. एंड कीप रिमेंबर दिस इज वेरी डिफिकल्ट चॉइस. बायोलॉजी में सिर्फ आसान है बिकॉज यू हैव अ बुक एंड दे विल जस्ट पिक फ्रॉम द बुक एंड नोवेयर एल्स. बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दिस इज अ डिफिकल्ट चॉइस इन पाकिस्तान. द फर्स्ट थिंग, you should follow the book, which is the textbook. Okay, you should know every single thing in your textbook. This is the first thing. Then you should know the value of each chapter in that book. You have 24 chapters in the book and you should see that which chapter is the most important and what is the value of this chapter. Okay, for example, you just go to the pollution thing and you just waste hours and days on those chapters. It means you are just wasting your time. Therefore, you should see
what is the value of each chapter according to the marks. Your own book or notes or a real book. अब जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में चूज करना एक बुक for ETA is a very difficult job. You can't find a book in the market. You can't go to market and find a book which is a complete book for the ETA. इसलिए पाकिस्तान में this is very difficult. So you must have your own notes or a real book. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है you should go to the text book. जो टेक्स्ट बुक हैं वो रीड करें अगेन एंड अगेन. ऑल द नंबर्स, ऑल द कैलकुलेशंस, ऑल द यूनिट्स, ऑल द वैल्यूज अब हाईलाइट करें. इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ईच चैप्टर, इन ईच टॉपिक अब हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें या उसके ऊपर लिखें. जब आप पॉइंट्स लिखेंगे इट मीन्स इट विल बिकम अ रियल बुक. तो आपको एक रियल बुक मिलेगी, एक ऐसी किताब जो कि एक परफेक्ट किताब होगी आपके लिए. बिकॉज व्हेन यू जस्ट टेक द क्लासेस, you go to academy or institution, अब classes लोगी. In the classes your teacher will tell you what is important and how to do this in a short way. वो आपको बताएगा आपका टीचर कि कैसे आपने ये क्वेश्चन हल करना है in a short way. So you have to follow those, okay? So you must have your own notes or real book. अपनी बुक के उन्हीं पॉइंट्स से आप अपने लिए नोट्स बनाएं और ऐसे नोट्स बनाएं जिसमें एवरीथिंग, हर चीज़ क्लियर हो. आप टेबुलर फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में ये सब बनाएं. ETA in my pocket, I'll just try to just publish this book very soon. Lekin this is very difficult for me because I have a lot of jobs to do and I have a lot of classes of ETA and seminars and things and talks. I'll just try to publish it very soon. Okay? इस किताब में हमने तमाम यूनिट्स, वैल्यूज, इक्वेशंस, ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट्स, नैम रिएक्शंस, रिएक्शन मैकेनिज्म, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स एंड मैनी मोर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपकी ETA के लिए इम्पोर्टेंट है. रेडिस्ट केस एंड हाईएस्ट केस एंड उसके अलावा compounds and about everything, okay, that which is the most electronegative element and compound with the most covalent, most ionic, less covalent, less ionic, and many more. Okay, याद रखिए, work hard is a very important thing in a smart way. Work hard in a smart way. Keep remember there is no shortcuts for the ETA. Work very hard in a smart way. So this is very important. मैं नई जो वीडियो बनाऊंगा in the next session, how to work in a smart way for the ETA. So I'm gonna do that and उसमें आप देख सकते हैं. So how to work in a smart way. So we're gonna talk about that as well. Maybe in my next session. Work hard, big dream. It means अगर आप hard work करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, so you can go to KMC, you can go to UET, you can go to a very good medical and engineering college. If you do not work hard, it means you cannot go to a good medical college and a good engineering college. And don't waste your time, because if you just catch the time, it means that you can qualify and you can have good marks, and it's all about the time. अगर आप catch नहीं कर सकते time को, keep remember you cannot get good position, you cannot have good marks, and you cannot qualify, because it's all about the time. Now this is the point, avoid mobile and social networks. And keep remember this is a very difficult decision for you. I know कि आजकल की यूथ के लिए मोबाइल को अवॉइड करना और सोशल नेटवर्क को अवॉइड करना, this is a very difficult job. But you have to take this decision. You have to take this step, and you have to follow this step. Keep remember, if you just follow, you have Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. You will definitely waste some of the time, and you waste the time, it means that you cannot qualify with good marks. Keep remember, if you have the time and you are determined, because ETA is all about the strong determination. Okay, so we're going to talk about this later, about other points, the smart talk, smart work, smart things. Thanks for watching. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें नीचे कि हम कैसे आपको असिस्ट कर सकते हैं और कौन सा टॉपिक जो आपको सबसे मुश्किल लगता है केमिस्ट्री में, हम उस पर वीडियो बनाएं. See you soon. Allah Hafiz.